Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. In today's class we will try to understand the concepts of regular expression. आज की इस क्लास में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को कुछ डिस्कस करेंगे. What is regular expression? ये होते क्या हैं? A regular expression is a way of defining expressions or strings. आपके पास लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशंस बनते हैं या जो स्ट्रिंग्स आप क्रिएट करते हैं, द एक्सप्रेशंस आर द स्ट्रिंग्स रिलेटेड टू सम लैंग्वेजेस आर डिफाइंड यूजिंग दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस. तो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है रेगुलर. रेगुलर मीन्स देयर इज़ सम रेगुलरिटी इन दोज एक्सप्रेशंस. मीन्स दीज आर लाइक फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू consider H2O. This H2O represents one molecule of water. If you need two molecules, you are not required to change the number of hydrogen or oxygen. That is, you cannot do it like H4O2 or whatever, but you simply multiply it by 2. So for water, H2O is a regular expression. Okay guys, so in languages we have different type of strings, or there are languages that produce some regular strings. तो उनके लिए we use regular expressions. A regular expression is a way to identify expressions with their proper name and give them a mathematical definition. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हैं? दीज आर द वेज. ये कोई मेथड्स हैं जिनसे के ज़रिए आप एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं उनके अपने प्रॉपर नेम से. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए आपने H और ऑक्सीजन के लिए आपने O यूज़ किया. दीज आर द प्रॉपर नेम्स एंड यू ट्राई नॉट टू यूज़ द अदर वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट समथिंग and give them a mathematical definition. Now water is a liquid, but its mathematical definition, its chemical formula is H2O. Okay, a regular expression is a special notation to define a language. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये स्पेशल नोटेशन है किसी लैंग्वेज को डिफाइन करने का. देखें यहाँ पर वर्ड जो रेगुलर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अपने जैसे ही लार्जर स्ट्रिंग्स या स्मॉलर स्ट्रिंग्स किसी एक रेगुलरिटी के साथ प्रोड्यूस करेगा. इट कैन प्रोड्यूस द स्ट्रिंग्स लार्जर दैन इट, स्मॉलर दैन इट, बट फॉलोइंग सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ओके, a regular expression is used to specify the structure of the language. किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है? A regular expression is the set of rules and symbols. इसमें क्या है? आपके पास रूल्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं, और रूल्स और सिंबल को आप कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स लाइक कॉन्केटिनेशन, अल्टरनेशन, जिसमें वी हैव स्लैश और प्लस, क्लीन क्लोजर, स्टार, पॉजिटिव क्लोजर, प्लस एज superscript. For example, A plus. Now here plus is superscript. 0 or 1 instance, which is question mark, parenthesis, and so on. Now the recursive definition of a regular expression. Rule 1. We know that if we are defining something using recursive definition, so there should be 2 or 3 rules for that definition. So regular expression के लिए we have the regular definition, recursive definition, as every letter of sigma can be made into a regular expression. If you have sigma is equal to A, B, C, then each of the letter of sigma can be made into a regular expression. This means, इसका मतलब ये है कि A भी इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, B भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, C भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, और इन तीनों की कोई कम्बिनेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है. Null itself is a regular expression. We know that null is part of every language. Null is just like a subset of every language. So null itself, an empty null string or empty string, is itself a regular expression. Now if we have two regular expression R1 and R2, then so are, अगर हमारे पास कुछ regular expressions हैं R1 and R2, तो R1 within parenthesis will be a regular expression. R1 R2, the concatenation, the product
of two regular expression is also a regular expression. The alternation plus or this one slash of two regular expression is also a regular expression. The clean closure of a regular expression is also a regular expression. 0 or 1 instance of a regular expression is also a regular expression, and positive closure of a regular expression is also a regular expression. Nothing else is a regular expression. So this means that we have these few rules, और हमने इन्हीं rules की मदद से we have to create some larger strings. Okay guys, now there are some rules for a regular expression, and by the end of these 9 rules you will understand the concept of, you will be understanding the concepts of the regular expressions in detail. Now the first one is dash is a regular expression denoting the empty string. Now according to the recursive definition, null itself is a regular expression. So this means cap null string is a regular expression denoting the empty string. Okay guys, now second is dash is a regular expression denoting the empty or null language. So this means this symbol phi denoting is a regular expression. ये एक regular expression है जो कि empty या null string को represent करता है. If A is a symbol in alphabet, just like I told you there, मैंने आप लोगों को बताया that each and every symbol of sigma, each and every symbol of an alphabet, this sigma is actually an alphabet. Okay, is a regular expression. If A is a symbol in sigma, alphabet sigma, then dash is a regular expression denoting A. This means then A itself is a regular expression denoting A. Number 4, dash is a regular expression denoting language having either A or B. So now we see that if there are two regular expression R1 R2, then their alternation is also a regular expression, their concatenation is also a regular expression. A or B, this means A or B is a regular expression. Dash is a regular expression denoting a language having a string of characters A and B, A, B. So this means A, B concatenation of two regular expressions. This rule says that A is a regular expression. This means B is also a regular expression. C is, every letter is a regular expression. So now if you have two regular expressions, then their concatenation is also a regular expression. Dash is a regular expression means a language having either 0 or more instances. Either 0 or more instances. Now we know that 0 or more instances are called clean closure. Clean closure is denoted by star. So this means clean closure of A. A star, 0 or 1 instance. This is 0 instance. This is 1, 2, 3, 4 and so on. 0 or more instances. Now 7. Dash is a regular expression means a language having either 1 or more instances of A, that is L. So this, if this is the symbol, then 1 or more means positive closure, and positive closure is given by plus as a superscript of the symbol. Symbol is A and plus. Positive closure of A. A plus is a regular expression representing positive closure. Dash is a regular expression means a language having either 0 or 1 instance. So this is 0 or 1 instance. Now we know that 0 or 1 instance is denoted by question mark. तो ये हमारे पास आ गया question mark. Any combination of above rules will also define a regular expression. अब इनमें से 1 से लेकर 8 तक जो भी हैं, आप इनकी कोई भी combination भी बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक regular expression होगा. If we combine any of these rules, above given rules, the result will also be a regular expression.
precedence of operators. Now, as regular expressions are like mathematical expressions, so there is a need to understand the precedence or priority of operators, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह है, इसलिए इनकी प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स को या प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को देखना ज़रूरी है. तो जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में होता है, वैसे यहीं भी parentheses have the highest priority. Actually parentheses जो होते हैं, they change the priority of the mathematical expressions or regular expression. Okay, so whatever lies inside the parentheses will be attempted before any other thing. Okay guys, now the unary operators, star means positive closure. Now this plus is actually clean closure, and question mark means 0 or 1 instances have the second highest priority. Okay, concatenation means dot or no operator. आप concatenation में आप a dot b भी लिख सकते हैं और आप इसको a b भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. तो ये इन दोनों के लिए concatenation has the third highest priority and alternation has the lowest priority. So this was something about regular expression. इस वीडियो में हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे. आप लोग ये वीडियो देखें. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, invite your friends to subscribe the channel. Okay guys, thank you.